Please. I am a student in Urmi. I am a medical student, and it was very tense for us because it was a time of war, and we were very uncertain what would unfold, and we were hoping that there will be a swift action, and it did. The Ministry of External Affairs and the embassy in Iran, Indian embassy in Iran, they helped us a lot. And when they came to our doorsteps and they told us we are bringing you home, and it was like, I felt so happy. And because airspace was closed, they firstly relocated us to Armenia through ground borders. And within one day, they airlifted us back to India, to our home, to our soil. And we're very happy. And we would like to thank the government of India, the Ministry of External Affairs, the embassy, the respect sir, for helping us. And I hope, because there are many Indian students and many Indian people that are still stuck in Iran, and they are relocating them to safer places, and then they will be, inshallah, they will be evacuating them to India back. I hope that they will be evacuated soon, and thank you so much. Your good name? Mir Salif. Sir, I can't explain all those things because we have traveled a lot, but it was very tense. The war was going on, and we could see missiles, and our neighborhood was bombed by the missiles, and it was very tense, very afraid of the situation. I hope we will never see those days again, nor our country, nor any other people. It was very difficult for us. That's all I can say. do one thing. Sir, can you also share, Indian government, MEA has been, sir, they are working to get the other people there. What are the things right now? Yes. So we have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going. And our missions have opened the 24-hour line for any request for evacuation. And as the situation evolves, we'll be sending more planes, more chartered flights to evacuate all Indian nationals from Iran. Any chance that Indian Air Force will be also pressed into services if that is a requirement? Right now, there is no such requirement, and we see no such need for the Indian Air Force right now. Thank you, sir. And we are having a good cooperation from both Armenia and Turkmenistan in evacuating our Indian nationals. And I'd like to thank the governments for the help they are giving us to evacuate our students and our nationals. Thank you. The government, you interacted them. What would you like to say? No, this is a duty to take care of our Indian nationals wherever they are. And such operations have been done in the past. Whenever there has been a crisis in any part of the globe, we have successfully carried out evacuations of all our Indian nationals. And in this case also, these are our valued students, and there are other nationals there, and we'll be doing everything possible to get them out safely back to our land. अच्छा, हम लोग अपनी तरफ से हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। अभी आज 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं, और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करता करेंगे। नहीं, हम लोगों को अभी एयरफोर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पूरे सेफ एयर स्पेस से हम लोग अपने नेशनल्स को ला रहे हैं। हम लोग की फ्लाइट जो ओपन एयर स्पेस है, जो सेफ एयर स्पेस है, उधर से आ रही है। जी, थैंक यू। अली अकबर सर, अली अकबर। सर हालात में तो हमने देखा, जैसे हमारी बस जा रही थी, बस के साथ में हमने मिसाइल देखी, एकदम हमारी आंखों के सामने जाती हुई देखी, और ड्रोन भी ऐसे गिरा था तो वहाँ पे 2 लोग मरे गए, तो ईरानी ही थे खैर, तो बड़ी में से देखे। फिर हमने बॉर्डर के जरिए क्रॉस करा,
अर्मेनिस्तान बॉर्डर से हमने क्रॉस करा तो वो अच्छा रहा, फिर हम अर्मेनिस्तान रुके, फिर आए, ठीक है। लेकिन उनका सिचुएशन जो दिखाई जा रही है न्यूज़ में अब है वही सिचुएशन है। पहली बार मतलब लग रहा है कि हाँ वही सिचुएशन है, बहुत बुरा हाल है। मतलब तेहरान बहुत मतलब बुरा हाल हो गया तेहरान का जी। सर मैं दिल्ली से ही हूँ, इधर से, दिल्ली से ही जी। क्या आप जो वक्त लगे तो पढ़ाई को लेकर सर यही हमें मेन प्रॉब्लम यही है, सेम यूक्रेन में हुआ था तो उनको सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को उन्होंने रिलोकेट करा था, मतलब किसी और कंट्री में अलाउ करा। अभी जैसे हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं है तो हमें पढ़ाई की प्रॉब्लम हो सकती है, हम यही चाहेंगे पढ़ाई की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम बहुत 4 साल हो गए उधर हमें भी। थैंक यू सर। मेरा नाम मरियम रोज़ है और मैं दिल्ली से हूँ। आप वहाँ पे आप हालात बताएं, किस स्थिति में इवैक्यूएट किया गया है? नहीं, अभी उस टाइम इतने हालात ख़राब नहीं हुए थे, उतने ख़राब नहीं हुए थे। खुश हैं कि हाँ, ये हमारी गवर्नमेंट का हम बहुत थैंकफुल हैं और इंडियन एम्बेसी ने बहुत जल्दी बहुत फास्ट काम किया है, बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया है। आपको क्योंकि वापस जाना हो सकता है अभी बहुत मुश्किल हाँ, हो, तो क्या पढ़ाई को लेकर भी चिंता है कि वापस कैसे डिग्री पे तो बात आई है, बट हम होप करेंगे कि जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। थैंक यू। My name is Aisha Mir, and Srinagar. So if you can share your experience. It was really, it was very worse there, but experience was good because embassy helped us in every way they can do. Are you worried about something now? Because No. I'm happy that I reached my home. I reached India. I'm happy. So thank you. I'm Varda and I'm from Kashmir, and we are the first ones to be evacuated from Iran, and there was a very critical situation over there, and we were very terrified actually, but we thank Indian government and Indian embassy who worked very fast and swiftly to bring us here. and you must have seen the situation out there, and you must have colleagues from other countries as well. Yeah. So if you can talk about them as well. Yeah, the situation there was very terrifying. Our neighborhood was attacked, especially then it became more terrifying. For us, it was like we were not from there actually. And when the Indian government came to our doorsteps, and it was like we are seeing our moms, it felt like home, seriously. And we were just relocated first of all to Armenia because airspace was closed. There, in Armenian government, they were very good. They just escorted us continuously wherever our buses went. We first of all got there to Armenia, and from there we got into the buses, and they first accommodated us. For the travel part, they escorted us continuously. We were just continuously followed by the securities, and they were very good with us. The people of Armenia were also good, and then we were finally evacuated here through flights, and nothing to say more than this. Thank you so much. I'd like to thank Indian government and Indian embassy who worked very swiftly for this. Thank you so much. I'm Behishta Bashir Khan. I'm from Kashmir. Kashmir, Baramulla. So आपने वहाँ देखा होगा कि दूसरे मुल्क के भी लोग होंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल क्या स्थिति थी
और भारत का जो रिस्पॉन्स है इंडियन गवर्नमेंट का, दोनों में क्या कुछ फर्क महसूस किया? आई मीन टेरिबल, इट वाज अ टेरिबल डिफरेंस, क्योंकि हम पहले बच्चे हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया वहाँ से. हमें नहीं पता था ये एक्शन इतना स्विफ्ट और इतना इमीडिएट होगा. वी वर ourselves in dilemma, what should we do, should we pack our things or not, but with like शाम को हमें एक मैसेज ड्रॉप किया गया that you will be relocated tomorrow, but we never knew shall we हमें evacuate किया जाएगा इंडिया, नहीं हमें वहाँ से वापस आना पड़ेगा, we never know. But then सुबह हमें relocate किया गया आर्मीनिया में, and then within 24 hours we were evacuated here in India.